or down a group. So this is the trend of atomic size or atomic radii. Next come to the second property. The second physical property is the ionization energy. Ionization energy. Or ionization enthalpy. It is also called as ionization enthalpy. So ionization, what is the trend of ionization energy? If you go down the group, the ionization energy decreases. Ionization energy decreases down the, that is from nitrogen to bismuth. कहीं डिक्रीज होची कमी कमी जाउची ना ड्यू टू द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज. गोटे एग्जांपल देखो नाइट्रोजन. नाइट्रोजन हैज ए स्मॉलर साइज. फॉस्फोरस हैज ए लार्जर साइज. तेणु न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भितर डिस्टेंस होची लेस होची डिस्टेंस कोडी. डिस्टेंस इज लेस इन नाइट्रोजन. इट न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भितर डिस्टेंस इज मोर इन फॉस्फोरस. जदि डिस्टेंस मोर हैला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस. ताने जदि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रति एटी अट्रैक्शन ता कोन अछि लेस अछि. तेणु हमको एटी कोन दबा को पड़िबो लेस एनर्जी दबा को पड़िबो. लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सो लेस इज द आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी. किंतु एटी साइज होछि स्मॉल. तेणु एटी कोन होछि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भितर अट्रैक्शन ता होछि स्ट्रांग. तेणु एटी ए इलेक्ट्रॉन को हमको रिमूव करिया को कोन दरकार मोर एनर्जी. मोर एनर्जी मींस मोर इज द आयोनाइजेशन एनर्जी. then if you go down the group from nitrogen to bismuth, atomic size body jauchi. Atomic size gradually increases, so the ionization energy decreases. किंतु आउ गोटे अछि एक्सेप्शनल केस अछि एठी कोन these group elements have generally higher ionization energy. काहे ना due to their stable electronic configuration. So group 15 elements have higher ionization energy as compared to group 14 and group 16. Why? ना due to its stable electronic configuration. काहे ना एमानकर वैलेंस सेल रे जो रहउची p सब सेल, this p सब सेल has कोन रहउची p3 is half filled. तेणु half filled subcells are highly stable. तेणु this nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth, their electronic configuration is highly stable. काहे ना their p subcell is half filled. ताले कोन हो एटी more energy is required to remove their valence electron. हला so they possess higher ionization energy even than group 16 elements. Next come to the third property is the electron gain enthalpy or electron affinity. Electron gain enthalpy or simply it is called as electron affinity. एटी कोन होची the group 15 elements have generally zero electron affinity. Property is the electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy or simply it is called as electron affinity. देखो ए जो एलिमेंट पूरा रहउची ग्रुप 15 रे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, they have stable electronic configuration. देखो नाइट्रो 1s2 2s2 2p3 जानकर जो वैलेंस सेल रे p सब सेल अछि दिस इज हाफ फील्ड. देन हाफ फील्ड सब सेल्स
a p half-filled piece of cell is highly stable. So in this case, more energy is required to remove this valence electron. More energy, due to their stable electronic configuration, they have no tendency to gain electron. Therefore, they have almost zero electron affinity or electron gain enthalpy. This is only due to their stable electronic configuration, because there is a half-filled piece of cell in their valence cell. Next, come to the fourth property is the electronegativity. Fourth is the electronegativity. As we trained cell, if you go from nitrogen to bismuth, nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth, the atomic size gradually increases. As the atomic size increases, their power or tendency to attract the shared pair of electron towards itself decreases. Therefore, the electronegativity decreases from nitrogen to bismuth due to the increase in atomic size. Increase of atomic size down the group. जब साइज टा बड़ी बड़ी जीव तर शेयर पेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टा कोन द पावर टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ तेनो जदि साइज टा बड़ी बड़ी जीव ताले तार न्यूक्लियस रु शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन प्रति जो डिस्टेंस टा कोन हबो इट ग्रेजुअली इंक्रीजेस बड़ी बड़ी जीव ताले कोन हबो द पावर टू अट्रैक्ट और टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन so that electronegativity decreases down the group in any group.